Hello KG2, good morning. So KG2, in English, what we are learning? We are learning OA sound words. OA sound words, where O says up and A says act. O says up and A says act, but together they say O. So we are learning OA sound words. Okay. And as I have told you that OS says O. So what will be GOA? Go. ROA? Row. SOA? So. COA? Co. TOA? toe. THROA? throw. FLOA? flow. TOA? toe. OA? o. LOA? low. BOA? bow. And we have done 3 O sound words in the notebook. We have done this. SOAP soap, BOAT boat, ROAD road. That means we have done 3 OA sound words in the notebook. Now we are going to write the 4th OA sound word in the notebook. So put number 4. This is your read and write work. This one is your read and write work. The next word is. First we will draw a picture. Although I am drawing a tree. I am drawing a tree, and this tree has very thick trunk. जो ये ट्री का ट्रंक होता है वो बहुत मोटा होता है. उस दिन मैंने बताया था ना एक ट्री के बारे में जो thousands of years लिव कर सकते हैं. वो thousands years तक जी सकते हैं. And that tree is an oak. That tree is an oak tree. The tree's name is oak tree, and it is a very big tree. It is a very big tree, and that tree is known as oak. And the spelling of oak is O-A-K. Oak. O-A-K. Oak. Okay, so oak is a kind of tree. Oak is a kind of tree. जैसे मैंगो ट्री होता है, एप्पल ट्री होता है, बनाना ट्री होता है, वैसे ही ओक भी एक ट्री होता है. और इस ओक ट्री में एक फ्रूट होता है जिसे एकॉर्न कहते हैं. और मैम ने बताया था आपको कि एकॉर्न के जो फ्रूट्स होते हैं, एकॉर्न फ्रूट्स, उसको खा के बहुत सारे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं. सो दिस ट्री इज नोन एज ओक. The spelling of oak is O-A-K. Oak. O-A-K. Oak. And this also you need to write 5 times. Now number 5. I have told you about a kind of tree that is known as oak. ठीक है? Now I will tell you about a kind of frog. एक frog के बारे में बताऊंगी जिसे toad कहते हैं. क्या कहते हैं? Toad कहते हैं. First let us try to draw it. Okay. First I will draw 2 big eyes. Okay. Then smile. Then its big face. Then 2 legs like this.
then this leg, then I will cover the body like this. Okay, and this kind of frog is a big frog. ये जो frog होता है ना थोड़ा big होता है ना? And I'm going to color it with green. So this is toad. Which frog is this? This is toad. And the spelling of toad is T-O-A-D, toad. T-O-A-D, toad. T-O-A-D, toad. T-O-A-D, toad. T-O-A-D, toad. Spelling is T-O-A-D, toad. So what is toad? Toad is a kind of frog. Toad एक frog होता है और we can make some patches over its body like this. T-O-A-D, toad. And the spelling is T-O-A-D, toad. We are learning O-A sound words. T-O-A-D, toad. T-O-A-D, toad. T-O-A-D, toad. Oh my God, this is a very big frog. तो बहुत बड़ा frog है. Toad. T-O-A-D, toad. O-A-K, oak. T-O-A-D, toad. O-A-K, oak. T-O-A-D, toad. Now it's the turn to write number 6. After number 4 and 5, what we will write? Number 6. We are learning O-A sound words. We are learning O-A sound words. And O-A say O. T-O-A, toe. S-O-A, so. B-O-A, go. R-O-A, row. O-A-O. C-O-A, go. L-O-A, low. T-O-A, toe. Now, I am going to draw a bread. I'm going to draw a bread slice. ठीक है? When we put our bread into a toaster, जब bread को हम toaster में डालते हैं, तो bread roast होके toast बन जाता है. So this is our toast. This is our toast. And do you know what is the spelling of toast? T-O-A-S-T, toast. T-O-A-S-T, toast. T-O-A-S-T, toast. T-O-A-S-T, toast. Put number 6 and write T-O-A-S-T, toast. T-O-A-S-T, toast. When bread is put into the toaster, it becomes toast. T-O-A-S-T, toast. T-O-A-S-T, toast. At number 7, I am going to
load. We will tell it a load. What we will tell it a load. एक बहुत भारी कोई चीज है जिसे हमने उठा लिया है, so it becomes a load. L-O-A-D, load. L-O-A-D, load. Okay. So what is this? This is a load, and the spelling of load is L-O-A-D, load. L-O-A-D, load. L-O-A-D, load. L-O-A-D, load. L-O-A-D, load. Load means the thing that has to be lifted up. कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ी भारी है और जिसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, that can be told as load. Load. T-O-A-S-T, toast. L-O-A-D, 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 load. Likewise, R-O-A-D, road. If T-O-A-S-T, toast, then what is R-O-A-S-T? Roast. T-O-A-S-T, toast, and R-O-A-S-T, roast. Isn't it? So, this is toast and this one is load. Toast. Toast, and this is load. Now I am going to give you the last word, that is from OA sound words. What we are learning? OA sound words. And we are going to draw a coat. We are going to draw a coat. So what would be the spelling of coat? What would be the spelling of coat? It will be coat. C-O-A-T, coat. This is number 8 and we are going to draw a coat. And for drawing a coat, you need to write Y. एक Y लिखना पड़ेगा ऐसा. ओके. और यहाँ बटन्स डालने पड़ेंगे कोट के. ओके. नाउ ये Y को यहाँ से कवर अप करना पड़ेगा. ओके. नाउ फिर से इसे कवर करना पड़ेगा लाइक दिस. यहाँ पर आपके स्टॉप होना पड़ेगा. कम हियर एंड स्टॉप. कम हियर एंड स्टॉप. एंड यहाँ से स्लैंटिंग लाइन डाउन. Slanting line down. So it will become the collar of the coat. Okay. Now we need to add sleeves. First draw the, and we need to add sleeves. Slanting down, and 2 standing lines again, like this. Okay. So this is a coat. This is a coat. Madam will tell you again how I have made it, how I have drawn it. सबसे पहले मैम ने क्या लिखा? Wide, like this. Okay. Then madam drew some buttons. 1, 2,
3, 4. ठीक है, ये Y को ऊपर से कवर किया लाइक दिस. इसके बाद वाली लाइन मैम ने क्या की, आर्क स्लैंटिंग डाउन, यहाँ स्टॉप होना है, देन स्लैंटिंग डाउन, यहाँ स्टॉप होना है, यहाँ पर स्लैंटिंग डाउन, स्लैंटिंग डाउन, slanting down, slanting down. Now we will draw the shoulders of the coat. Shoulders of the coat. Slanting down, stop here. Slanting down, stop here. Then come standing. Stop. Come standing this way also, this side also. Stop. And now standing line, standing line. Cover it and make 2 ovals here for the sleeves. Okay, and a coat has a pockets too. Okay, so this is a coat. C-O-A-T, coat. C-O-A-T, coat. C-O-A-T, coat. You need to write it 5 times. C-O-A-T, coat. C-O-A-T, coat. C-O-A-T, coat. C-O-A-T, coat. So, what are the spellings? Let us revise one more time. R-O-A-D, road. C-O-A-T, coat. L-O-A-D, load. S-O-A-T, soap. B-O-A-T, boat. T-O-A-D, toad. T-O-A-S-T, toast. And O-A-K, oak. Okay? Now, KG2, we will write rhyming words of OA sound words. Now turn the page and write the heading as rhyming words. R-H-Y-M-I-N-G, rhyming. W-O-R-D-S, rhyming words. आज मैम थोड़ा डिफरेंट राइमिंग वर्ड्स का प्रैक्टिस देगी आपको, ठीक है? हमेशा आप राइमिंग वर्ड्स को मैच करते थे ना, आज हम राइमिंग वर्ड्स खुद से लिखेंगे. ओके, राइमिंग वर्ड्स. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 1, 2, 3, 4 words. Madam is going to give you 4 words. Okay, और वो 4 words के rhyming words लिखने हैं. The first word is boat. B-O-A-T, boat का rhyming word लिखना है, जिसमें लास्ट में O-A-T आना चाहिए. Next is number 2 is load. L-O-A-D, load. जिसपे आपको इसका राइमिंग वर्ड्स लिखना है. 2 more rhyming words you need to write. 1, 2. 1, 2. Next is O-A-K, oak. मैम ने बताया ना, oak is a kind of big tree. एक बहुत बड़ा ट्री होता है oak. Oak. Next is the last one is toast. T-O-A-S-T, toast. You need to write 2 more rhyming words. You need to write 2 more words that rhyme to the given words. Boat का 2 rhyming word लिखना है, load का 2 rhyming words लिखना है, oak का 2 rhyming words लिखना है, और toast का भी 2 rhyming word लिखना है. So I am going to
नाव, जो आपने हिंदी में नौका पढ़ा है ना, औ की मात्रा में, वही बोट होता है। बोट मीन्स नौका। And the rhyming words of boat is goat. G-O-A-T, goat. Goat means बकरी। G-O-A-T, goat. Goat means बकरी। और अभी हमने बनाया था C-O-A-T, coat. B-O-A-T, boat. G-O-A-T, goat. C-O-A-T, coat. Next. L-O-A-D, load. What is the rhyming word for load? It is R-O-A-D, load, means sadak, and T-O-A-D, toad. That means a kind of frog. L-O-A-D, load, R-O-A-D, load, T-O-A-D, toad. Next. Oak. Oak means a kind of big tree. और इसका जो राइमिंग वर्ड है वो न्यू वर्ड है आपके लिए, ठीक है? मैम उसका मीनिंग बताएगी। S-O-A-K, सोक। S-O-A-K, सोक। सोक का मतलब होता है लाइक जब मम्मा को या फिर हमें कपड़े धोने होते हैं तो व्हाट डू? वी सोक क्लोथ्स इनटू द वाटर। हम कपड़ों को भिगोते हैं, तो सोक मीन्स भिगोना। ओके, पहले एक बकेट लेते हैं, बकेट में पानी डालते हैं और उसमें वॉशिंग पाउडर डालने के बाद कपड़ों को पानी में भिगोया जाता है। दैट इज कॉल्ड सोक। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज C-L-O-A-K, क्लोक। आपको पता है ये क्लोक क्या होता है? जो कोट होता है ना, और वो बहुत अगर लंबा हो, आपके पूरे फीट तक जाए, एक बहुत लॉन्ग कोट इज कॉल्ड क्लोक। सो O-A-K, S-O-A-K, so, C-L-O-A-K, क्लोक। The last one, T-O-A-S-T, toast। मैम ने बताया ना, जब आप ब्रेड को रोस्ट करते हो तो वो टोस्ट बन जाता है। ओके, सो दिस the rhyming word of toast is R-O-A-S-T, roast. R-O-A-S-T, roast, and C-O-A-S-T, coast. Coast का मतलब होता है किनारा। Have you ever been to पुरी और मुंबई बीच? आप पुरी बीच या मुंबई बीच में कभी गए हैं? तो वो जो किनारा होता है ना, जहाँ पर हम बैठते हैं या फिर टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ सैंड होता है, दैट इज कॉल्ड अ कोस्ट। ओके, समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? कोस्ट। सो द राइमिंग वर्ड्स दैट वी रोट टुडे आर B-O-A-T, boat, G-O-A-T, goat, C-O-A-T, coat, L-O-A-D, load, R-O-A-D, road, T-O-A-D, toad, O-A-K, oak, S-O-A-K, soak, C-L-O-A-K, cloak, and the last one is T-O-A-S-T, toast, R-O-A-S-T, roast, C-O-A-S-T, coast. So here our OA sound word is completed today. That's all for today, KG2. Have a nice day. Bye bye.